Hello everyone and welcome back to my playlist of head and neck anatomy. Today we are going to do chapter number 19 from BD Chaurasia volume 3 which is about the anatomy of the eyeball. यानी ये जो आपकी आंखों के balls हैं, the eyeballs, उसकी anatomy हमको discuss करनी है. Beautiful eyes. Our eyes are placed in front because it is more important to look ahead than look back. क्या बात है यार. I mean I really like this quote. जिंदगी में वैसे भी हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं. और इसको आप इससे भी अंदाजा लगाएं कि आगे देखना क्यों इंपॉर्टेंट है. बिकॉज नेचर ने आपकी आई बॉल्स आगे रखी हैं, पीछे नहीं. ओके, सो मूव फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड. That's the way to do in your life. Now, sense of sight perceived through the retina of the eyeball is one of the 5 special senses. So, eye is basically, ये कहते हैं ना, eyes are the windows to your body. So, this is one of the 5 special senses. बाकी आपकी smell है, taste है, all these things. So, one of them is, sight. And the sight की जो sense है, that is related with the eyeball. और आईबॉल में मुख्तलिफ लेयर्स है, भी हम पढ़ेंगे. देयर आर डिफरेंट 3 लेयर्स हैं. उनमें से जो इनर मोस्ट लेयर है विच कंटेन्स रेटिना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर साइट. इट्स इम्पॉर्टेंस इज ऑब्वियस इन द वेरिड वेज ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन. अब ये सुनो क्या बात है. बॉडी का डिजाइन इस तरह से है कि आईज को 2-4 डायरेक्शन से प्रोटेक्ट किया हुआ. फॉर एग्जाम्पल, आईज आर प्रेजेंट इन द बोनी ऑर्बिट. आंखों के इर्द गिर्द बाकायदा स्कल का पार्ट है ना, बोनी ऑर्बिट. प्लस ये जो नोज है उसकी भी अगर एनाटॉमी आप देखें, उसकी मैकेनिक्स भी इस तरह से है कि वो प्रोजेक्टेड आउटवर्ड. तो कोई भी चीज अगर आपके चेहरे की तरफ आ रही है तो पहले वो आकर के इट्स काइंड ऑफ अ स्टॉपर. ये नोज से आके वो अटैच होगी, लगेगी, उसके बाद वो आईज तक जाएगी. सो काइंड ऑफ एक आपकी इस तरह से ना, इफ यू हैव द आईज देयर, सो आपकी नोज ऐसे निकली हुई है. सो इफ एनीथिंग इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स योर फेस, फर्स्ट थिंग इट्स प्रोबेबली गोना हिट इज योर नोज. तो एक प्रोटेक्टिव बैरियर है. ये एनाटॉमिकल बाउंड्रीज हैं जिससे आपकी आईज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की हुई है. Each and every component of its 3 codes is assisting the retina to focus the light properly. We'll talk about these 3 codes. एक सबसे आउटर कोड है, फिर मिडिल लेयर है, फिर इनर लेयर है. वो सब के सब बेसिकली उन सब का ओवरऑल जो फंक्शन है आई का, वो यही है कि टू सी थिंग्स प्रॉपरली. और हर लेयर उसी फंक्शन की तरफ कंट्रीब्यूट करती है. A lot of advances have been made in correcting the defects of the eye. Eye can be donated at the time of death and a will can be prepared accordingly. So this is one of the thing जो कि one of the transferable organs. So cornea transplantation is being routinely done. और बहुत से लोगों की आईसाइट वीक होती है, सो उसकी करेक्शन की जाती है. फॉर एग्जांपल मैंने खुद भी, मेरे भी नंबर्स हैं, ग्लासेस लगे हुए हैं, स्कूल के टाइम से लगे हुए हैं. लोग कहते हैं कि पढ़ते बहुत हैं, रियलिटी ये है कि टीवी बहुत देखता था. सो वी हैव करेक्शन ऑफ आई प्रॉब्लम्स and they are practiced very routinely, and even eye transplantation is also being done routinely. About 75% of the afferents reach the brain through the eyes. So आपकी सेंसेस का एक मेजर पोर्शन आपका विजन है, आप देखते हैं चीजों को. ठीक है. सो अगर आप ट्राई टू इमेजिन कि अगर आप अपनी जिंदगी से आईज को हटा दें तो पीछे बच क्या जाता है. आपका जो बॉडी की तरफ इनपुट है एनवायरनमेंट का, वो तो खत्म ही हो जाएगा. बिकॉज आप चीजों को देखते हैं, परसीव करते हैं. ये सारा आफ्रेंट आपकी बॉडी में एंटर होता है बाय योर आईज. And therefore adequate rest to the eye muscle is very important. A good यार ये रेस्ट कैसे मिलता है इसको मुझे बताएं. बाय स्लीपिंग ना, जब आप सोते हैं तो आंखें बंद करते हैं और वो एक रेस्टिंग फिनोमिना है. यहाँ देखो बीडी चौरासिया इज गेटिंग अ लिटिल चीकी, नॉटी हो रहा है थोड़ा सा. अ गुड प्लेस फॉर रेस्ट कुड बी द क्लासरूम. मेरी क्लास में वैसे सोते नहीं है यार स्टूडेंट्स, बट इन मेनी ऑफ द क्लासेस द स्टूडेंट्स आल्सो स्लीप, एंड व्हेन यू स्लीप यू गेट रेस्ट टू योर आईज. ओके, सो बीडी चौरासिया, द ऑथर, इज बीइंग very cheeky here. The eyeball is the organ of sight. The camera closely resembles the eyeball in its structure, and this is just not by chance. Camera basically human eye structure की basis को देखते हुए बनाया गया है. So the first camera, for example, the pinhole camera, or initial days में the scientist who worked on camera quite a lot is Ibn al-Haytham. So that scientist worked big time on the discovery, or I should say not the discovery, actually making the first camera. डिस्कवरी तो वर्ड बहरहाल हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज ऑलरेडी हो, उसको डिस्कवर कर लिया गया, बट कैमरा बनाया गया था. एंड दैट वाज मेड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन आई.
बिल्कुल ऐसे ही जैसे और बहुत सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, रॉकेट्स, ये सब चीजें बनी हैं बाय लुकिंग एट द बर्ड्स। बर्ड्स को प्रिंसिपल्स को देख करके ये एरोप्लेन्स वगैरह बनाए गए हैं कि बर्ड्स जैसे फ्लाई करती हैं तो एरोप्लेन को भी उस प्रिंसिपल पर डिजाइन किया गया। ऐसे ह्यूमन आई जिस तरह काम करती है उस प्रिंसिपल पर कैमरा बना है। सो आज आपके पास जो टेलीफोन्स मौजूद हैं जिन पर जबरदस्त कैमरा पीछे लगे हुए हैं, पहचानो कौन सा फोन है, 3 पता है ना कौन सा है। सो इसी तरह आपकी आई, लेकिन आपकी आंखों जैसी रेजोल्यूशन वाला कैमरा आज तक नहीं बना, किसी ने नहीं बनाया। सो यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल कैमरा एवर जनरेटेड ऑन दिस प्लैनेट। Eye is almost spherical in shape and it has a diameter of about 2.5 centimeter. ये इसका total diameter की बात हो रही है। Eyeball is made up of 3 layers. अब ये 3 इसकी layers, जो outermost layer है, it's a tough layer, और general principle आपको पता है ना, the outermost layer is protective. It is known as sclera. It's a fibrous cord. Then there is a middle layer which is vascular and that is called choroid. And then there is the innermost layer which is called retina. Retina का काम है, basically retina contains nerve fibers. तो इसका काम है लाइट रेज जो आ रही हैं आइज तक, उस मैसेजिंग को प्रोसेस करके ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचाना। सो दैट्स व्हाट द जॉब ऑफ रेटिना। सो आउटर मोस्ट लेयर इज फॉर प्रोटेक्शन, देन द मिडिल लेयर इज वैस्कुलर and the innermost layer is actually sensitive and it is involved in making the images. So there are 3 layers, okay? So vascular cord is the middle one and the final one is the nervous cord because it is connected by the optic nerve to the brain. Light entering the eyeball passes through several refracting medium from before backwards. These are cornea, aqueous humor, lens and vitreous body. So if you look at the eye structure here, यहाँ से कोई भी, suppose this is standing person, ये मैं खड़ा हुआ हूँ और ये आपकी आंख है और ये जो लाइट रेज जब यहाँ से एंटर होंगी, सो द फर्स्ट ट्रांसपेरेंट थिंग फ्रॉम विच द लाइट एंटर्स इज द कॉर्निया। उसके बाद देयर इज एक्वस ह्यूमर इन द एंटीरियर चैम्बर, देन द लेंस एंड देन द विट्रस। सो लाइट इस तरह ट्रेवल करके अंदर तक पहुंचेगी फ्रॉम दीज 4 थिंग्स। 1 is the cornea, 2 is the aqueous humor, 3 is the lens and 4 is the vitreous humor. ये जो चारों चीजें हैं, these are called refractory media. Refractory media इसलिए because जैसे ग्लास होता है, so if you know physics from your high school, if this is a glass, लाइट जब यहाँ पड़ेगी तो लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। स्ट्रेट पाथ होता तो ऐसे जाती है ना लाइट, लेकिन लाइट ऐसे नहीं जाती, इट रिफ्रैक्ट्स, और फिर वो जब रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकलती है उसका पाथ ओरिजिनल इंसिडेंट रे से डिफरेंट होता है बिकॉज देयर इज एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रीजन ये है कि जो ग्लास है इट्स नॉट एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से डिफरेंट है, और अगर पानी होगा तब भी रिफ्रैक्शन होगा। इसीलिए जब पानी में अगर आपको एक स्टोन नजर आ रहा है, आप ऊपर से देख रहे हो, दिस इज योर ब्यूटीफुल आई, और आप ये स्टोन देख रहे हैं, तो स्टोन जहां नजर आ रहा है एक्चुअली वहां होता नहीं है। यानी लाइट रेज, दिस इज वन मीडियम विच इज एयर, दिस इज अनदर मीडियम विच इज वाटर। सो लाइट रेज जब एंटर होती हैं सो दे रिफ्रैक्ट एंड द इमेज यू सी इज नॉट एट द ओरिजिनल पोजिशन, इट्स एट अ रिफ्रैक्टेड, इट्स स्लाइटली डिफरेंट पोजिशन। तो आइज में भी कहानी इसी तरह है कि जो आपको लाइट रेज एंटर होती हैं वो इन ट्रांसपेरेंट मीडिया से गुजरती हैं, तो ऐसे जैसे ग्लास से गुजर रही हैं, और ग्लास से गुजर रही हैं तो थोड़ा बहुत उनमें बेंडिंग होती है, उस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये 3 लेयर्स नाम याद रखनी है, इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। विल फर्स्ट स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द स्क्लेरा, देन कोरॉइड की बात करेंगे, फिर रेटिना की बात करेंगे। एट द आउटसेट में एक चीज और आपको बता दूं कि आई जो है इट इज बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द फोर ब्रेन, आपके ब्रेन की इमेजिनेशन से बनता है। सो देयर इज जो फोर ब्रेन है उसमें से इनिशियली ऐसे एक ऑप्टिक वेजिकल निकलता है दोनों साइड पे, और फिर ये बड़ा होकर बाकायदा ऑप्टिक कप बनाता है, और उस ऑप्टिक कप के अंदर एक्टोडर्म से लेंस एंटर होता है। सो आई के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली 2 ओरिजिन्स इनके हैं। अच्छा, वैसे मेरी लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी की आई की पूरी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप वो देख भी सकते हैं कि व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ आई। लैंगमैन से मैंने पूरा चैप्टर करवाया हुआ है। बट इसमें जो 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, नंबर 1, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले सारे स्ट्रक्चर्स, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ दीज आर ऑल मेड अप फ्रॉम द आउट पॉकेटिंग ऑफ द ब्रेन। सो ये ऑप्टिक कप कहलाता है। देखिए, इट्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं इस पूरे को इस तरह से शेड ऑफ कर दूं, सो दैट्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम ऑप्टिक कप कहते हैं। और ये ऑप्टिक कप जितना मैंने एरिया कवर किया है वो सब इस ऑप्टिक कप से ही बनता है, एक्चुअली ये वाला एरिया भी बनता है। और जो लेंस है ये बाहर मौजूद जो एक्टोडर्म है उससे बनता है और फिर अंदर इन्वेजिनेट कर जाता है। तो लेंस हैज एन एक्टोडर्मल ओरिजिन और
आगे का जितना भी एरिया है आई का, दैट इज डेवलप फ्रॉम द ब्रेन। और ब्रेन ही की तरह इसमें ये 3 लेयर्स भी हैं। देखो ब्रेन में 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। यहाँ पे ड्यूरा की जगह स्क्लेरा है, एरेक्नॉइड की जगह कॉर्वाइड है, और रेटिना बेसिकली पाया मैटर की जगह है। सो इट्स लाइक दिस। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट लेयर विच इज द आउटर कोर्ड, स्क्लेरा, आउटर कोर्ड ऑफ द आईबॉल। Sclera is the outermost layer. It is a hard layer, basically fibrous layer है, opaque as well because इसमें से light नहीं गुजर सकती. It forms the posterior 5/6 of the eyeball. It is composed of dense fibrous tissue which is firm and maintains the shape of the eyeball. So because it is the outermost covering का purpose यही होगा कि protection होगा and to give the shape to the organ, इस केस में eyeball. और जैसे मैंने आपको बताया कि eye itself develops from the outpocketing of the forebrain, तो ये जो outer layer है which is sclera, it is actually equivalent to dura mater. जैसे brain में outermost layer dura mater है. It is thickest behind near the entrance of the optic nerve, यानी जहां optic nerve enter हो रही है, that's the most thickest area of sclera, and thinnest about 6 mm behind the sclerocorneal junction. देखो ये जो स्क्लेरा है ये कॉर्निया के साथ ब्लेंड कर रहा है और इससे 6 मिलीमीटर पीछे ऑलमोस्ट इट इज द थिनेस्ट. ओके, हाउएवर इट इज वीकेस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक नर्व. थिकेस्ट है इस जगह पर लेकिन वीकेस्ट है जहां ऑप्टिक नर्व एंटर हो रही है, बिकॉज ज़ाहिर है यहाँ पे एक सीव है, एक सुराख बन गया ना, ऑप्टिक नर्व इसको परफोरेट करके अंदर एंटर हो रही है. हियर द स्क्लेरा शोज न्यूमरस परफोरेशंस फॉर पैसेज ऑफ फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व. और ये परफोरेशन इंपॉर्टेंट भी है ऑब्वियसली, वरना ऑप्टिक नर्व गुजरेगी कहां से? बिकॉज इट्स सीव लाइक अपीयरेंस, दिस रीजन इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज लैमिना cribrosa. Crib कहते हैं सीव को. So because there is a lot of fibers of the optic nerve going, तो यहाँ पे सीव बेसिकली कहते हैं छन्नी को. जैसे चाय की छन्नी कैसे होती है, जिसमें से छोटे छोटे सुराख होते हैं ताकि पत्ती ऊपर रह जाए और चाय नीचे निकल जाए, ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ बच जाता है बिकॉज बहुत सारे नर्व फाइबर्स यहाँ से निकल रहे होते हैं. So that part of sclera is sometimes also called lamina cribrosa. The outer surface of the sclera is white and smooth. In fact, आप अगर कभी आंखों में किसी के देखते हैं, अपनी आंखों में देखें शीशे में, सपोज ये आपकी आई है, अजीब सी बनाई है, आई एम सॉरी फॉर दैट. एक तो ये ब्लैकिश पोर्शन है, साइड पे ये जो व्हाइट आपको पोर्शन नजर आ रहा होता है सारा, ये क्या है? दैट इज बेसिकली द स्क्लेरा. ओके, इट्स एंटीरियर पार्ट इज कवर्ड विद कंजंक्टिवा थ्रू व्हिच इट कैन बी सीन as the white of the eye. So white of the eye जो आपको दिख रहा है, that is basically the sclera, और उसके ऊपर जो covering है, that is what is the conjunctiva. अच्छा, ये जो outer layer है which is the tough and the white layer is also known as, it is covered by Tennant's capsule. That is the name that you have to remember. अब जो inner surface है, that is brown and grooved because of a lot of nerves and vessels. It is separated from the choroid by the pericardial space, which contains delicate cellular tissue termed as suprachoroidal lamina or lamina fusca. This is a lot of information to remember, but in easy words, what we are talking about is the fact that this sclera has 2 layers. There is an outer layer, there is an inner layer. The outer layer is the whitish, and that's what you see in the eye as well, and वो conjunctiva से covered. And then जो स्पेस की बात हो रही है, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट. लेट मी सी अगर वो किसी डायग्राम पे दिख जाए, बट एनीवेज बिटवीन द कॉर्वाइड एंड स्क्लेरा देयर इज अ स्पेस, एंड दैट स्पेस इज बेसिकली नोन एज पेरिकॉर्डियल स्पेस. ये बिल्कुल वैसे है जैसे ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस थी, इसको हम नाम देते थे सब ड्यूरल स्पेस. तो सब ड्यूरल स्पेस ही की तरह यहाँ पर जो स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द स्क्लेरा एंड द कॉर्वाइड, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरिकॉर्डियल स्पेस. The sclera is continuous anteriorly with the cornea at the sclerocorneal junction, or it is also known as the limbus. So जहाँ sclera खत्म हो रहा है और cornea शुरू हो रहा है, that junction is known as limbus or the sclerocorneal junction. Okay, the deep part of the limbus contains a circular canal known as sinus venosus sclera or the canal of Schlemm. Now, this canal is very important because the aqueous humor drains into the anterior scleral or ciliary veins through this sinus. तो ये जो सारा circulation है, that basically happens through this small canal. यहाँ से अगर इसमें किसी भी वजह से blockage हो जाए, तो aqueous humor का drainage disturb होगा, and there may be high pressure in the anterior chamber. So you see this blue thing, little blue thing is the sinus venosus sclerae. Okay. Right, moving forward, the sclera is fused posteriorly with the dural sheath
of the optic nerve. मैंने आपको बताया था कि स्क्लेरा इज द आउटर लेयर और ड्यूरा मैटर की तरह ये जैसे ब्रेन में ड्यूरा मैटर कवर करता है, ऐसे आई में आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा है. तो पीछे जाकर से मुराद क्या है? स्क्लेरा पीछे जाकर, पीछे मतलब जहां पे ये ब्रेन के साथ, ये ऑप्टिक नर्व को ब्रेन के साथ कनेक्ट हो रहा है, वहां ये स्क्लेरा ड्यूरा मैटर के साथ ब्लेंड हो जाता है. And that makes perfect sense because it is basically developed from the outpocketing of the forebrain. Now it provides स्क्लेरा की बात हो रही है. इट प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आईबॉल जिसमें रेक्टाई हैं और ऑब्लिक्स हैं. सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर, ये जो सुपीरियर ऑब्लिक या इंफीरियर ऑब्लिक हैं या मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस हैं, दीज रेक्टाई एज वेल एज द ऑब्लिक, दीज आर द एक्सट्रिंसिक मसल्स एंड दे एक्चुअली अटैच ऑन द आईबॉल. तो ये आईबॉल की आउटर लेयर पे अटैच होते हैं, इस लेयर पर, बिकॉज इट्स अ टफ लेयर, और यहीं ये अटैच होके आईबॉल को मूव करते हैं. द स्क्लेरा इज पियर्स्ड by a number of structures. Very important. It is the outermost covering of the eyeball. Exam में ये बहुत पूछते हैं कि what are the structures which actually pierce, इसमें घुस के सुराख करके अंदर जाते हैं. So obviously एक structure जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, that is the optic nerve. Optic nerve is the sclera को बीच में से फाड़ के अंदर, और भी कुछ structures हैं. For example, you see this diagram. इस diagram में this green thing is the sclera. This is the sclera. इन्होंने कहीं लेबल किया भी होगा. That's the sclera. Sclera को कुछ चीजें आर पार गुजर रही हैं. एक तो ऑप्टिक नर्व है, वो मैंने यहाँ आपको बता दिया. Then we have ciliary nerves in the arteries and anterior ciliary arteries. So if you look at the diagram, here are the anterior ciliary artery. ये क्रॉस कर रही है sclera को. इसी तरह there is this vein, the vena or verticosi. They are also crossing the sclera, and you also see the long posterior ciliary. This is also crossing the sclera. So these are all the structures which are actually crossing the scleral boundary. तो आई जो है उसमें, अच्छा, इनका पहुंचना भी जरूरी है. एंटीरियर सीलियरी आर्टरी इज ऑब्वियसली एन इंपॉर्टेंट आर्टरी टू द स्ट्रक्चर विच आर अंडरलाइंग. तो ये अगर यहाँ से क्रॉस नहीं करेगी तो ये अंदर के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कैसे करेगी? सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर यू टू रिमेंबर. वेना वर्टिकोसा also they are also known as the choroid veins. They pass through the sclera just behind the equator. So ये तमाम स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए कि स्क्लेरा को क्रॉस कौन कौन करता है. Okay, then the sclera is almost avascular. Important point. ये खुद इसकी ब्लड सप्लाई को खास नहीं है, हालांकि इसको ज़ाहिर चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना. It will require oxygen and stuff. तो that is usually provided by the fluid which is moving around. But itself इसके लिए कोई designated blood supply नहीं है. However, the loose connective tissue between the conjunctiva and the sclera is called the apex. That is vascular. So it gets some oxygen by diffusion. अपनी इसकी ब्लड सप्लाई नहीं है डेजिग्नेटेड. अच्छा, अभी स्क्लेरा हम आउटर लेयर पढ़ रहे हैं ना. सो आउटर लेयर में स्क्लेरा फ्रंट रीजन में जाके ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर में ब्लेंड होता है. दैट इज कॉर्निया. सो कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट. It replaces sclera over the anterior 1/6 of the eyeball. Its junction with the sclera is called limbus. ये बता चुका हूँ. The cornea is more convex than sclera, but the curvature diminishes with age, और उससे eyesight problems होते हैं. It is separated from the iris by a structure called the anterior chamber. So if you look at the diagram here, this is cornea. Up there is no fun in telling this कि this is transparent. Obviously it has to be transparent. यार अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट इसमें से पास ही नहीं होगी ना. वी वांट द लाइट टू पास थ्रू द कॉर्निया एंड रीच टू द रेटिना. इफ इट वाज ओपेक फॉर एग्जांपल, तो लाइट पास कैसे होती? सो इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट. और अदर थिंग, लिम्बस की आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. स्क्लेरा और कॉर्निया का जो जंक्शन है, दैट जंक्शन इज नोन एज लिम्बस. Okay, right. So all this is important discussion. बात को आगे बढ़ाते हैं. The cornea, anterior chamber बता रहा था मैं, वो तो बात रह गई. So this is cornea, and then between the cornea and the lens and the iris, you basically see this is the anterior chamber. आपको हर आएगी डायग्राम में. So this, for example, is the cornea. This is the iris, and that's the anterior chamber. So the anterior chamber is filled with aqueous humor. इसमें जो liquid है उसका नाम है aqueous humor. अभी थोड़ी देर में उसके बारे में भी पढ़ेंगे. The cornea is avascular, just like we were discussing a little while ago. Sclera के बारे में भी हमने ये बात की थी. It's avascular, and it is nourished by the lymphs which circulate in the surrounding spaces. अच्छा, it is supplied by the ophthalmic nerve and also the short ciliary nerves. Pain is the only sensation arose from the cornea. So if cornea is hit or damaged or any problem in the cornea, the only sensation is pain. So you cannot feel, for example, temperature. You cannot feel, for example, pressure. The
only sensation in cornea is painful sensation. Okay. Then the histology and the microanatomy is structurally cornea consists of these following layers. So there is corneal epithelium, which is a stratified squamous non-keratinized epithelium. Then there is a Bowman capsule, which is also called the anterior elastic lamina, substantia propria, Descemet's membrane, also the posterior elastic lamina, and simple squamous mesothelium. So if you look at the diagram here, this is a section through the cornea. Obviously, the outermost you see the stratified epithelium, then substantia propria, Bowman capsule, Bowman membrane, not the capsule, that's in the kidney. So the Bowman's membrane is just below the stratified squamous epithelium, then substantia propria, and then you have a posterior epithelium and Descemet membrane. So इधर इस साइड पे एक epithelium, उसकी एक मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन एंड उसकी एपिथेलियम, और बीच में सबस्टेंशिया प्रोप्रिया. सो दैट्स एन इजी वे टू रिमेंबर. दोनों एंड्स पर एपिथेलियम है और मेम्ब्रेन है, और बीच में सबस्टेंशिया प्रोप्रिया है. Now, cornea can be grafted from one person to other because it is avascular. अगर vascular होती तो फिर host versus donor reactions start हो जाते हैं, graft reactions. But because this is avascular, no such problem. Injury to cornea may cause opacities, and if opacities develop, light कैसे pass होगी? Light pass नहीं होगी तो it will interfere with the vision. Eye is a very sensitive organ, and even a dust particle can give rise to pain. Yes, we know that. Bulbar conjunctiva is vascular. Inflammation of the conjunctiva leads to conjunctivitis, a very common problem. Can be viral, can be because of allergy. The anteroposterior diameter of the eyeball and shape and curvature of the cornea determine the focal point. Important. अभी बताता हूँ. Changes in these result in myopia or short-sightedness, hypermetropia or long-sightedness. Now, here is a diagram where we are looking at the normal eye. देखें पॉइंट ये है कि जब लाइट रेज हमारी आईज में एंटर होती हैं, सो दे पास थ्रू 4 रिफ्रैक्टरी मीडिया. पहला रिफ्रैक्टरी मीडिया है कॉर्निया इटसेल्फ, तो कॉर्निया में लाइट बैंड होती है थोड़ी बहुत. सेकंड रिफ्रैक्टरी मीडिया है एक्वस ह्यूमर, जो कि एंटीरियर चैम्बर में होता है. थर्ड रिफ्रैक्टरी मीडिया है लेंस, जिसका काम ही है लाइट को रिफ्रैक्ट करना. एंड फोर्थ रिफ्रैक्टरी मीडियम है विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर या विट्रस लिक्विड. इन चारों रिफ्रैक्टरी मीडियम के बाद ऑब्वियसली लाइट कन्वर्ज होती है, एंड द बेस्ट सिनेरियो इज कि वो लाइट कन्वर्ज हो. देखें इस पॉइंट पर ये इधर से जो भी लाइट आ रही है वो इस पॉइंट पे मिल रही है. अगर ये कन्वर्जिंग पॉइंट आपके रेटिना पर पड़ रहा है देन इट्स परफेक्ट, it's normal. और अगर ये रेटिना पर नहीं पड़ रहा then that's a problem. Sometimes what happens कि जो हमारा लेंस है या कॉर्निया है, it becomes distorted, more rounded in a way कि ये जो focal point है यानी जो convergence of entering rays है that happens before retina. And sometimes it happens after retina. इस केस में लेंस थोड़ा सा लैक्स इस तरह से हो जाता है, elongated, so उसका जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाता है ऐसे कि लाइट कन्वर्ज होती है even after retina. And if it becomes more rounded like this, then it will converge before retina. So ये दो सिनेरियोज हैं. अगर लाइट रेज रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती हैं, लेंस या कॉर्निया मोर राउंडेड या मोर कॉन्वेक्स हो जाते हैं, द कंडीशन इज कॉल्ड मायोपिया, या इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं. एंड दिस कंडीशन जिसमें लेंस इस तरह हो जाता है, मोर राउंडेड नहीं बल्कि इलोंगेटेड हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस, या कॉर्निया भी ऐसा हो जाती है, फ्लैट कॉर्निया, देन द लाइट रेज कन्वर्ज उनका फोकल पॉइंट बियॉन्ड रेटिना. इन दोनों केसेस में आपको ठीक नजर नहीं आएगा बिकॉज इमेज तब ठीक बनेगी जब आपका जो फोकल पॉइंट है, जो कन्वर्जेंस है, दैट हैपेंस ऑन रेटिना, बैंग ऑन टू रेटिना. अगर रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे ये कन्वर्जिंग होगी तो इमेज नहीं बनेगी. अब इन पेशेंट्स में जिनमें मायोपिया है यानी जिनमें फोकल पॉइंट या इमेज रेज की कन्वर्जेंस रेटिना से पहले हो रही है, सो व्हाट वी डू इज चश्मे लगाते हैं ऑब्वियसली, एंड वी यूज कॉन्केव ग्लासेस. कॉन्केव ग्लासेस से होगा ये कि जब लाइट रेज आएंगी सो वो थोड़ा सा पहले इस तरह से रिफ्रैक्ट होंगी, डाइवर्ज होंगी, फिर कॉर्निया और लेंस पर पड़ेंगी और फिर उनका फोकल पॉइंट एडजस्ट हो जाएगा ऑन टू द रेटिना. सो दैट्स द पॉइंट you have to remember कि if the focal point moves before retina, you use concave lenses. और इस सिनेरियो में what you have to do is you have to use a convex lens. या इसको आसान और भी एक तरीका याद करने का ये है कि देखो इस सिनेरियो में मैंने आपको क्या बताया था, the lens becomes
thinner and the lens become straight. तो इसको अब लाइट को सेट करने के लिए you use more rounded type of glasses. तो अब आप convex glasses यूज करेंगे ताकि लाइट रेज कन्वर्ज हों और कन्वर्ज होके फर्दर जब वो कन्वर्ज होंगी तो they may fall onto retina. So ये जो आप चश्मा बनवाने जाते हैं और चश्मे बनाने वाला आपका नंबर चेक करता है तो वो एक्चुअली यही नंबर चेक कर रहा होता है कि मैं कौन सा ग्लास लगाऊं तो जो इमेजेस हैं, जो लाइट रेज हैं, वो एग्जैक्टली रेटिना पर आकर के कन्वर्ज हो, फोकल पॉइंट रेटिना की तरफ मूव हो, यही वो कर रहा होता है. सो से फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी में कन्वर्जिंग पॉइंट को बिफोर रेटिना से रेटिना पे मूव करना है तो आई हैव टू यूज कॉनकेव ग्लासेस. पहले मैं अगर एक नंबर फॉर एग्जांपल यूज करता हूं तो वो यहाँ पे कन्वर्ज होता है तो फिर मैं नंबर चेंज करूंगा until the point when I see the clear image. और क्लियर इमेज का मतलब ये है कि जो कन्वर्जिंग है लाइट रेज की वो एग्जैक्टली रेटिना पर हो रही है. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग ग्लासेस एंड करेक्शन ऑफ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया. ओके, सो जो आउटर लेयर है, वी वर टॉकिंग अबाउट आउटर लेयर है ना. आउटर लेयर में देयर इज स्क्लेरा व्हिच इज प्रोटेक्टिव, देन इन फ्रंट देयर इज कॉर्निया. तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी है अबाउट द आउटर लेयर. Now let us start our discussion about the middle layer, which largely is vascular और इसमें blood vessels हैं, and that contains, that is known as, middle layer in the eye is known as choroid. Choroid is a thin pigmented layer which separates the posterior part of the sclera from the retina. So if you look at the diagram again, so this one for example, so this is choroid, and choroid किसको separate कर रहा है? Sclera को और retina को. That's what it's doing. Because it is the middle layer, it is separating the outermost layer and the innermost layer. That's absolutely logical thing, है ना? Anteriorly, it ends at ora serrata by merging with the ciliary body. So अगर आप choroid को trace करें तो anteriorly it goes and binds with the ciliary body. So this is choroid just in the middle. It goes anteriorly and then blends with the ciliary body anteriorly. Okay, and what happens posteriorly? Posteriorly, it is perforated by the optic nerve to which it is firmly attached. So if you trace the choroid posteriorly, it is attached to the optic nerve. All right, then its outer surface is separated from the sclera by suprachoroidal lamina, which is traversed by ciliary vessels and nerves. Easy stuff. Its attachment to sclera is loose and actually there is a space between them. The inner surface is firmly united to retina. Structurally, it is composed of suprachoroid lamina, then which is towards the sclera. Then there is a vascular lamina, then choriocapillary lamina, and then the inner basal lamina. So even if you don't remember these technically, doesn't really matter. So simple सी चीज जो choroid के बारे में याद रखनी है कि it is the middle layer present between the sclera and the retina. Anteriorly it blends with the ciliary body, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे, and posteriorly it blends with the covering of the as a covering of the optic nerve. So now let's see what do we mean by ciliary body. It is basically a thickened part of the uveal tract lying just posterior to the corneal limbus. Limbus मैंने आपको बताया था is the point जहां पर cornea और sclera आपस में मिल रहे हैं. So if that's the limbus point, because ये sclera है और ये cornea है, ये limbus point है, इसके बिल्कुल पीछे जो thickened structure है, which is continuous kind of with the choroid, this thickened structure is known as ciliary body. Okay, तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए ये है किधर. इट इज कंटिन्यूअस एंटीरियरली विद द आइरस एंड पोस्टीरियरली विद द कोरोइड. दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. यानी अगर आप इस सिलियरी बॉडी को देखें, सो हियर वी हैव दिस सिलियरी बॉडी. पीछे अगर देखें पोस्टीरियरली इट इज कंटिन्यूअस विद द कोरोइड and anteriorly it actually is continuous with the iris, which is अभी इसके बारे में पढ़ेंगे iris के बारे में. So it suspends the lens and helps it in accommodation for near vision. That's the job of the ciliary body. Lens को adjust करता है. The ciliary body is triangular in cross section, not an important point. It is thick in front and thin behind. Okay, the scleral surface of the body contains ciliary muscles. Here we are talking about some business. Sclera, this is the outer layer. उसकी तरफ there are some muscles which are called ciliary muscles. The posterior part of the vitreous surface is smooth. Vitreous surface, यानी ये वाला surface, it is smooth, which is also called the pars plana. The anterior part is, however, ridged.
और उसमें there are about 70 ciliary processes. So if you look here, this is the anterior part and these are the ridges that we are talking about, the ciliary processes, and there are about 70 of them. Ciliary zonule is thickened vitreous membrane fitted. This is not important point of discussion. Ciliary muscle, जिसका अभी हमने जिक्र किया था कि which is present and it helps in accommodation of the lens. It's a ring of unstriped muscle which are longitudinal or meridional, radial and circular. These are the different directions in which the muscle fibers move. The longitudinal or meridional fibers arise from a projection of sclera or scleral spur near the limbus. They radiate backward to the suprachoroidal lamina. All these structures and names we have discussed. The radial fibers are obliquely placed and get continuous with the circular fibers. The circular fibers lie within the anterior part of the ciliary body and are nearest to the lens. The contraction of all the parts of this muscle basically relaxes the suspensory ligament, and whenever the suspensory ligament is relaxed, the lens becomes more rounded, it becomes more convex. Very, very important point. So contraction of ciliary muscle basically relaxes the lens because it laxes the grip of suspensory ligament. All the parts of the muscles are supplied by parasympathetic nerves, which is basically given its input by the Edinger-Westphal nucleus, oculomotor nerve, and the ciliary ganglion. So the bottom line is, whenever the ciliary muscles they contract, they basically relaxes the suspensory ligament and the lens become more rounded. Okay, let's now talk what is the iris. This is in the anterior part of the uveal tract. It forms a circular curtain पर्दे की तरह है, with an opening in the center called the pupil. So basically होता ये है कि if this is the lens, तो लेंस के आगे ऐसे एक पर्दे की तरह है. So this is like this. अगर ये पर्दे के बीच में जो जगह है ना, इसमें से बेसिकली लाइट गुजरती है, and this जगह is known as pupil. और ये जो पर्दे आ रहे हैं curtain, this is called iris. By adjusting the size of the pupil, it controls the amount of the light entering. Now imagine, अगर एक सिनेरियो ये है, सेम लेंस में अब ये पर्दा ऊपर इधर मूव कर गया और ये वाला पर्दा नीचे मूव कर गया, तो यहाँ देखें प्यूपिल का साइज छोटा है, यहाँ प्यूपिल का साइज बड़ा हो गया, तो ज्यादा लाइट एंटर होगी. एंड इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस. इफ दिस इज द लेंस, देन द पर्दा बिकम्स लाइक दिस. यू सी, अब ये प्यूपिल का साइज बहुत छोटा हो गया, तो लाइट कम एंटर होगी. सो द साइज ऑफ द प्यूपिल एंड पोजिशन ऑफ द आइरिस बेसिकली डिसाइड कि कितनी लाइट एंटर होगी. So by adjusting the size of the pupil, it controls the amount of light entering the eye, and this behaves like an adjustable diaphragm in a microscope, for example. It is placed vertically between the cornea and the lens, thus divides the anterior segment of the eye into an anterior and posterior chamber, both containing aqueous humor. So अगर आप diagram देखें, let's move back to this diagram. इस diagram में this is the lens, this is the iris, and this is the cornea. So iris is present between the cornea and the lens. Iris के आगे जितना structure है, this is called anterior chamber. Iris के पीछे ये जो सारा chamber है, this is called posterior chamber. और anterior और posterior दोनों chambers में जो liquid भरा होता है, उसको हम नाम देते हैं aqueous humor. Okay, ये aqueous liquid. So easy stuff है ये. Anterior chamber, posterior chamber और aqueous liquid, aqueous humor, ये आपको पता होना चाहिए. Its peripheral margin is attached to the middle of the anterior surface of the ciliary body. Iris is connected with the ciliary body and is separated from the cornea by the iridocorneal angle. The central free margin forming the boundary of the pupil rests against the lens. So बीच में ये जो free margin, that's the free margin. Okay, right. Now the anterior surface of the iris is covered by a single layer of mesothelium, and the posterior surface by the double layer of the deeply pigmented cell. So if this is your lens again, if this is your lens and this is what we are talking about the iris, तो उसकी एक anterior surface है और एक posterior surface है. Anterior surface में there is single layer of mesothelium और posterior surface में there are deeply pigmented cells which are continuous with the ciliary body. The main bulk of the iris is formed by the stroma made up of blood vessels and loose connective tissue. The long posterior and the anterior ciliary arteries are there, and some other minor arteries, major and minor arterial sulcus. That's what you should. The color of the iris is determined by the number of pigment cells and its connective tissue. If the pigment cells are absent, the iris is blue, like some people have blue eyes, due to diffusion of light in front of the black posterior surface. So blue-eyed people basically do not have pigments in the iris. Okay.
Iris contains a well-developed ring of muscles known as sphincter pupillae. देखो अब तक मैंने एक मसल आपको बताया था आई का, which was basically ciliary body में ciliary muscle. Ciliary muscle के contraction से the lens is becoming more rounded. एक और मसल की अब हम बात कर रहे हैं, which is called sphincter pupillae, which lie near the margin of the pupil. Its nerve supply is also parasympathetic, and it is similar to that of the ciliary muscle. The dilator pupillary is an ill-defined sheet of radial muscle. So, एक muscle sphincter pupillae, एक muscle dilator pupillae. It is also placed at the posterior surface of the iris. Now, this one is supplied by the sympathetic nerve. Some clinical stuff. But before that, I need you to look at this diagram. You see, this is the lens, which is pretty flat. Here is the retina. Light rays entering, focusing here. This is suspensory ligament when it is tight. So whenever the suspensory ligament, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात समझा रहा था कि whenever ciliary muscles contract, what they do is they relax the suspensory ligament. And when the suspensory ligament is relaxed, the lens becomes more rounded. This is all depicted here. So this is the ciliary muscle. When it is contracted, suspensory ligament is relaxed and the lens becomes rounded. When the ciliary muscles are relaxed, the suspensory ligament is tight, and the tight suspensory ligament means straight, flattened. And this happens when you have to see subjects which are far away. दूर कहीं देखना, इस डायरेक्शन में नहीं है यार, इस डायरेक्शन में देखना क्योंकि रेटिना इधर है. दूर कहीं कोई चीज़ है तो यू यूज दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ. नज़दीक कोई रीडिंग करनी है, कोई किताब पढ़नी है, देन दिस इज व्हाट हैपेंस. सो व्हेन यू हैव टू रीड अ बुक, योर ciliary muscles are contracted so that your lens becomes rounded, so that you can focus much better on the near subjects. Okay, so far vision में क्या होता है, near vision में क्या होता है, all important stuff, right? Some clinical things while looking at infinite far, ये मैं आपको समझा चुका. When reading a book, ये मैं आपको समझा चुका. Okay. Now human vision is colored, binocular, and three-dimensional. We have a beautiful system. Squinting, we'll discuss this when we talk about squints. ये हमने optic nerve के साथ पढ़ना है. Actually ये मैं आपको करा चुका हूँ. Watch my videos on cranial nerves and you will master this squints. Now the last layer, inner layer, which is basically a neuronal layer, because इसका ताल्लुक है, देखो outermost layer जो कि sclera थी, इसका ताल्लुक था protection. Then we had a vascular layer which was choroid, and now is the neural layer जिसका ताल्लुक है जो लाइट रेज आती हैं उनसे इमेज बनाना, ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचाना. सो द इनर कोट इज मेड अप ऑफ रेटिना. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रेटिना नाउ. रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर. इट इज अ वेरी थिन लेयर, डेलिकेट लेयर, और ये कंटिन्यूअस है विद द ऑप्टिक नर्व. The outer surface of the retina is formed by the pigmented cells and is attached to the choroid. यानी अगर आप इस डायग्राम को इमेजिन करें तो it makes perfect sense कि ये ऐसे सीक्वेंस में मामला चल रहा है. सबसे बाहर देयर इज स्क्लेरा, देन कोरोइड, एंड देन देयर इज रेटिना. तो रेटिना की जो आउटर लेयर है वो बेसिकली कोरोइड के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, एंड इट इज अ पिगमेंटेड लेयर. और जो इनर लेयर है दैट देन कंटेन्स द नर्वस स्ट्रक्चर, व्हाइल द इनर सरफेस इज इन कांटेक्ट विद द हाइलोइड मेम्ब्रेन ऑफ द vitreous humor. The opposite, and again if I have to show you, then this is the inner layer of retina and it is directly in contact with the vitreous humor. That's what it says. Okay, so jo outer layer hai that is in contact with the choroid and the inner layer is in contact with the vitreous. Opposite the entrance of the optic nerve there is a circular area known as the optic disc. It is 1.5 millimeter in diameter and that is opposite to the entrance of the optic nerve. तो देखिए इस डायग्राम पे दिखाया है कि this is the optic nerve, जहाँ पे optic nerve connect कर रही है आई के साथ. ये yellowish structure retina है and this area which is just opposite to the optic nerve, that area is known as the optic disc. इसी optic disc में एक depression है and you see this depression which is called the cup, और ये basically area वो है जिसमें there are no rods and no cones. So इसको हम कहते हैं physiological blind spot. So that is the optic disc, और इस optic disc में there is a blind spot. Okay. अच्छा, अब ये कुछ फीचर्स हैं जो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं बेसिकली, बट विल गो थ्रू देम मोर डिटेल्स वी विल डिस्कस इन हिस्टोलॉजी. रेटिना diminishes in thickness from behind forward. It is divided into optic, ciliary and iridial parts. The optic part of the retina contains nervous tissue and it is sensitive to light. It extends from the optic disc to the posterior end of the ciliary body. The anterior margin of the optic part of the retina
forms a wavy line which is known as ora serrata. So ora serrata का अगर आपने concept लेना है, so let us look at this diagram. This is retina. ये देखें, these curvy areas are known as ora serrata. अच्छा, अब एक दो important points हैं, actually terminologies हैं जो आपको पता होनी चाहिए regarding the structure of retina. One is the physiological cup, which is the depressed area of the optic disc. Which is very important because it contains no rods or cones and therefore it is insensitive to light. It is the physiological blind spot of your eye. So let's have a look at the physiological cup which contains the blind spot. So if we look at this diagram, so at the point of the entrance of the optic nerve, there is a depression, and this depression is known as physiological cup, and it is this physiological cup जहाँ पे rods and cones बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, दूसरा पॉइंट भी डायग्राम पे दिखा देता हूँ, फिर टेक्स्ट में दिखाता हूँ. इस physiological cup से थोड़े से डिस्टेंस पर there is another depression which is known as macula lutea, और ये जो macula lutea है इसका बिल्कुल सेंट्रल जो डिप्रेशन वाला पॉइंट है, दैट इज नोन एज फोविया सेंट्रालिस. सो ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए रेटिना के हवाले से. दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन सी? एक मैंने आपको बताया फिजियोलॉजिकल कप विच इज द ब्लाइंड स्पॉट, और दूसरा मैंने आपको बताया मैक्यूला ल्यूटिया जिसका सेंट्रल पॉइंट है फोविया सेंट्रालिस. इट इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द रेटिना. इट कंटेन्स ओनली कोन्स एंड देयरफॉर इट इज द साइट ऑफ मैक्सिमम एक्यूटी. यानी एक पॉइंट है जो ब्लाइंड स्पॉट है और दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम एक्यूटी. पर्टिकुलरली कोन्स इसमें बहुत ज्यादा है. फिर रॉड्स एंड कोन्स आपको पता होना चाहिए आर द लाइट रिसेप्टर्स ऑफ द आई. द रॉड्स कंटेन पिगमेंट्स कॉल्ड विजुअल पर्पल. They can respond to the light. The periphery of the retina contains only rods, but the fovea has no rods. Fovea में सिर्फ और सिर्फ cones हैं. The cones respond to the bright light, which is the photopic vision, and they are also sensitive to color. So you see sharp colored images. The fovea centralis only has cones. The number diminishes towards the periphery of the retina, क्योंकि periphery में rods ज़्यादा हैं. ठीक है? अच्छा जी. Then the retina is composed of 10 layers. That is important. Retina 10 ये मिलता जुलता है. Again, we will discuss about them in histology lectures, so don't worry about them for now. The retina is supplied by the central artery of the retina, which is an end artery. यानी अगर इसमें bolus हुआ, बंद हो गया मामला, तो कहानी गई. In the optic disc, it divides into an upper and the lower branch, giving of nasal and temporal branches. The artery supplies the deeper layers of retina up to the bipolar cells. The rods and cones are supplied by diffusion of the capillary. So basically the blood supplies from the central artery. That's the important point. Okay. Retinal detachment occur between the outer pigmented layer and the inner nervous layer. Actually, because of any trauma or any punch or things like that, the detachment of retina is one important clinical anomaly. Okay, so at this diagram, for example, you can see the outer layer and the inner layer. There is detached retina. It detaches there. You can see, you can clearly see it has tear trauma की वजह से या किसी भी pressure की वजह से it has actually detached off. Right? Now, aqueous humor पे थोड़े से comments मुझे करने हैं, and then we talk about vitreous humor, and then almost the chapter would be over. Lens का discussion है. Aqueous humor is the liquid which is present in the anterior chamber as well as the posterior chamber. So it's a clear fluid which fills the space between the cornea in front and lens behind. So lens है, आगे cornea है इसके बीच में, और ये iris है. तो iris के आगे anterior chamber है और iris के पीछे posterior. Anterior और posterior दोनों chambers में aqueous humor है. This space is divided by iris into the anterior and the posterior chambers, and both of them are filled with aqueous humor. The aqueous humor is secreted into posterior chamber from the capillaries in the ciliary process. Okay, it passes into the anterior chamber through the pupil. From the anterior chamber, it is drained into the anterior ciliary vein through the iridocorneal angle और एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर एंड द कैनाल ऑफ श्लेम. ये मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ. अगर कैनाल ऑफ श्लेम ब्लॉक होगी तो एक्वस ह्यूमर की सर्कुलेशन में प्रॉब्लम. Interference with the drainage. If there is any blockage of the canal of Schilm, there will be increase in the intraocular pressure, which is what we call glaucoma.
Intraocular pressure is due chiefly to the aqueous humor which maintains the constancy of the optimal dimension of the eyeball. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है aqueous humor, क्योंकि इसमें अगर मसला हुआ तो पूरा डायमेंशन कॉर्निया का भी चेंज हो जाता है, लेंस का भी चेंज हो जाता है, विच मीन्स आपका सारा विजन डिस्टर्बेंस हो जाती है. और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो नरिशमेंट ऑफ द कॉर्निया है वो भी डिस्टर्ब होती है, बिकॉज वो डिफ्यूजन से उसको मिलती है. एवरीथिंग गेट्स डिस्टर्ब इफ देयर इज ग्लोकोमा. सो ग्लोकोमा को हल्का नहीं लें आप. Now, overproduction of aqueous humor or lack of its drainage or combination of both raises the intraocular pressure and the condition is known as glaucoma, must be treated urgently. Lens के बारे में थोड़े से the features. Lens is a transparent biconvex structure like this. Convex इधर से भी और convex इधर से भी. Which is placed between the anterior and the posterior segments of the eye. It is circular in outline, has the diameter of 1 centimeter. सब यार easy बातें हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. The chief advantage of the lens is that it can vary in the dioptric power. यानी अगर suspensory ligament relax होगा तो it becomes more rounded. Suspensory ligament tight होगा तो it becomes straight like this. Okay. It contributes about 15 diopters to a total of 58 dioptric power of the eye. It is inverse of the focal length in meters. यार बहुत ही पावरफुल लेंस नेचर ने आपकी आंख में लगाया है. ऐसा कोई कैमरा भी बना भी नहीं है, राइट, जिसमें ऐसा लेंस हो इतना ब्यूटीफुल, और पर्टिकुलरली वो अपनी फोकल लेंथ भी चेंज कर रहा हो. वाओ. The posterior surface of the lens is more convex than the anterior surface. Well, these discussions are all too much details, not important for you. The lens is enclosed in a transparent structureless capsule, which is thickest anteriorly near the circumference, deep to the capsule. Again, all histology details. So, all these in the histology lecture. Okay. So, suspensory ligament पे हम बात कर चुके हैं कि how does it make the lens more rounded and more straight. Now, lens become opaque with increasing age, which is what we call the cataract. Not only age, there are so many other causes of cataract, but I mean, there are then different operations that can be done to correct that cataract. The central artery of the retina is an end artery. अगर उसमें blockage हुआ, this can lead to blindness. Horner syndrome results in partial ptosis. ये चीज़ें हम तब डिस्कस करेंगे जब हम sympathetic supply and the nerve supply to eye. So cranial nerves के साथ देखिएगा. Vitreous body, मैं बता चुका हूँ आपको already what is vitreous humor. It is a jelly-like substance which is present. So if this is your eye, यहाँ पे lens placed है. So यहाँ जो पूरा lens के पीछे retina तक जितना भी liquid है, all that is known as vitreous body. It's a colorless jelly-like transparent mass which fills the posterior segment of the eyeball. It is enclosed by a thin hyaloid membrane जो रेटिना के साथ टच में होती है. Behind it is attached the optic disc and in front there is ora serrata जो कि रेटिना का पार्ट है. In between it is free and lies in contact with the retina. The anterior surface of the vitreous body is indented by the lens in the sclerocyte. Fine, no, nothing, anything जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो. Development, Langman, पूरी वीडियो मेरी अवेलेबल है. Development of eye. ओके इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा बता दिया है, बट मैंने पूरी डेवलपमेंट की वीडियो अपलोड की हुई है, तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा. ओके, देयर आर सम डायग्राम्स हियर शोइंग यू लेफ्ट थर्ड नर्व पैल्सी, बट वॉच माई वीडियो ऑन क्रेनियल नर्व. सिर्फ इस एक डायग्राम पे मैं टाइम नहीं स्पेंड करने लगा कि व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग, हॉर्नर सिंड्रोम क्या है. वॉच माई वीडियोज ऑन क्रेनियल नर्व्स इन माई न्यूरो एनाटमी प्लेलिस्ट. Okay, so that's all about this chapter. I hope you liked the video. If you did, please share it with your colleagues and subscribe the channel. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा.